the man who will be giving the finale to Rising India, celebrating our real heroes. Ladies and gentlemen, the for the concluding session of Rising India, celebrating real heroes. May I now welcome Rahul for his introductory speech for the Vice President. नमस्ते, आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। On this auspicious day, ladies and gentlemen, it is my proud privilege to welcome to Rising India Real Heroes, His Excellency, the Vice President, Shri Jagdeep Dhankhar ji. We are honored that he has agreed to deliver the closing address to cap off a day and a half of invigorating sessions that depict the mood of a rising India. We chose Real Heroes as the theme of this event because of a very particular reason. India, a young and ambitious nation, is on the move, and the world is watching us closely. This quickening of our pulse is made possible not by a few, but by the many. In far-flung corners of our country, men and women with large hearts and clear consciences are putting society above themselves. They are the real heroes who make life a little better for those around them and inspire communities to become a little better. Dhankar ji's life and career are similar to the stories of real heroes we have had the privilege of honoring over today and yesterday. Born into a farming family in a small village in Rajasthan, he used to walk over 6 kilometers a day just to attend school. His upbringing, with emphasis on hard work and simplicity, was honed at the Sainik School. A physics graduate, he, however, found his true calling at the bar. He was the youngest president of the Rajasthan High Court Bar Association and practiced mainly in the Supreme Court from 1990. He also had a 3-year stint as a member of the International Court of Arbitration in Paris. As a parliamentarian, minister, the governor of West Bengal, his contributions to the country are many and varied. He has excellent knowledge of the Constitution, and his expertise with legislative affairs is a big strength. He has been uncompromising in his insistence on decorum inside Parliament. Dhankar ji has also been an ardent advocate for the separation of powers. Yet, he is known as someone who is accessible and humble, which makes it easy for people to warm up to him. He is known for his amiable relationships across party lines, and, as we have just discovered today, a fine sense of repartee. Dhankar ji also has an excellent relationship with spiritual organizations such as the Ramakrishna Mission and Bharat Sevashram. He is an avid reader and a sports aficionado, and has served as the president of the Rajasthan Olympic Association and the Rajasthan Tennis Association. Shri Dhankar's life story reflects a rising India, one where we go forth and achieve our goals, unmindful of hurdles or distractions. I would now like to request His Excellency, the Vice President, to deliver the closing address. Ladies and gentlemen, the Honorable Vice President, Jagdeep Dhankhar. Podium.
always a difficult situation when you have in the audience people who know you. And the problem is complicated exponentially when you have someone like senior advocate Chetan Sharma in the audience. This doesn't end here. The august presence of Sri Harivansh Deputy Chairman of Rajya Sabha. But he carries another hat, and that's always worrisome for me. A journalist is always a journalist. In 1989, when I got elected to Parliament and became a Union Minister, my room in Parliament was next to the press room. Till 2019, I carried an impression, oh, you can't have better friends than in journalism. The myth was demolished when I became Governor, State of West Bengal. I hope it is restored. I will do all I can. Dr. Rajkumar Ranjan Singh, Sri Rahul Joshi ji, members of the diplomatic corps, other dignitaries, and my friends in the media. I can assure you, I am certainly your friend. I hope you will reciprocate. Indeed, a marquee event, all the more significant, being hosted in Amrit Kal. It is eminently befitting and soothing that focus and attention is being bestowed on our real heroes. I pause here for a moment. I have always been concerned. Iconic status in our country is accorded on parameters that are baffling. Event management can put a person in a position. He's a leading lawyer. He's a leading journalist, and whatnot. But we are talking of real heroes. At a time when India is on the rise as never before, it is a statement of fact, globally acknowledged. And the rise is unstoppable, earning unprecedented global recognition and respect. As a mark of respect to our heroes, let's pledge, take pride in our historic accomplishments and be ever proud Indians. Always keep nation first. No interest, business or otherwise, can be more than national interest, above national interest. And this, when I say is not optional, I reflect the viewpoint of more than 1 billion people. The theme of the coffee table book, unveiled a while ago, to be unveiled, Voice of India, Modi and his transformative Mann Ki Baat, is very apt. And I compliment the Rahul for being very daring in choosing it. Mann Ki Baat, in a sense, has impactfully captured the imagination of the people. And mind you, there can hardly be any difference of opinion. This is one program that is watched with keen interest and that impacts the lives of people as never before in the history of this country. And this is for honest discourse and seamless connect with the people. I appeal to media for wider dissemination of the coffee book content, as I have been given details thereof.
Let us highlight success stories of real Bharat and exemplify our age-old value system. Friends, we are the most functional democracy in the world. There be no doubt about it. There is no democracy in the world that is constitutionally evolved at the level of panchayat, municipalities, state, and center. We have constitutional prescription in the shape of Part 9 of the Constitution for panchayats and 9 capital A for municipalities. No world government can claim to have such a vibrant, functional democracy reflecting diversity and unity simultaneously. Our constitutional institutions are spinally strong and independent. We are proud of our judicial system. Where on the planet you'll get a Supreme Court which can act with lightning speed and grant relief when someone is accused of defamation? Where on earth? Where will you get a Supreme Court that will sit over time? We have finest judges, and the Chief Justice has unimpeachable credentials with global image. None in the world has legitimacy or credentials to lesson us on this aspect. Of late, some are engaged into it. I wouldn't say more, because in our country we have effective government, and we have seen in last few months how effectively our External Affairs Minister has reflected on those issues in public domain, in the country and outside. But those so engaged need to look within and revisit their thoughts. But what is painful, worrisome, and concerning, that some amongst us are engaged in thoughtless orchestration of sinister campaign to taint and tarnish our democratic institutions. We find sinister forces within and without, functional with pernicious agenda to sully and downsize our growth trajectory, our democratic institutions, and run down our success. You will not find a parallel in the world where people holding positions of power would go to other country, other geographical locales to run down their own country. We all need to reflect on this. We need to be cognizant of virtual intense warfare against India's integrity by well-orchestrated global machinery functioning within and outside the country. One can see an entire ecosystem aimed at handicapping our growth, attacking India's legitimacy as nation-state, its constitutional institutions, including the parliament, is becoming a favorite pastime, even of some of us. I am sure thinking minds in the country will be alive and take all steps to contain and combat such pernicious tendency. An intense assault on India's values, integrity, and institutions is emanating from well-maintained incubators. I wouldn't say much, but I'll call upon the media. Look at South Asia studies in an Ivy League university. This is being funded by our billionaires. Even the government in 2008 funded it. And the same is also being done by our northern neighbor.
But look at their activities with respect to our nation and with respect to that nation. It's a cause of concern and worry. Should we be funding those whose only agenda is to thoughtlessly, in a designed manner, run down this nation? I'm sure my friends in journalism, and I'm sure I'm their friend, so are they mine, will reflect on this, engage in due diligence, and let the people of this country know all about this. This ecosystem to combat India's growth trajectory must not be allowed to go unnoticed. And that can happen only when we react. Such orchestrated narratives are disseminated. And this is, I seek pardon of the journalistic fraternity. Orchestration emanating in a sinister manner with pernicious design is put in high decibel and disseminated by media and intelligentsia. The activities of Goebbels pale into insignificance. Friends, the real tribute to our real heroes, because of whom we are enjoying this democracy, are in the 75th year, because of whom we are laying the foundation of 2047, when India will be celebrating centenary of its independence. A tribute to those real heroes is to ensure the relentless crusade against corruption fructifies into legal finality. It is most unfortunate and a matter of concern that legally sanctified crusade against corruption is sought to be combated by partisan stance and individual concerns. How can issues of corruption be seen from political prism? How can issues of corruption be seen from the interest of an individual? Issues of corruption have to be seen in the backdrop of the fact matrix. It is time for all of us to realize none in democracy can claim on any ground whatsoever, position or otherwise, to be above law and beyond the reach of law. Accountability to law is not optional in democracy. It is inalienable facet of democracy. There can be no democracy, there can be no democratic values if some individuals can claim and walk away with it. We are different. Doesn't matter. You do it by both methods. It is time for all to reconcile to this level playing field reality. And always remember, I am referring to a quote, often quoted, quote, "Be you ever so high, the law is always above you," unquote. I don't know why some people can garner support, ignoring this such vital a sense of democracy and such kind of a legal situation. Issues including arising out of judicial verdicts have to be systemically addressed. There is a mechanism to address all issues under the Constitution. There is a hierarchical mechanism. If there is a verdict of the court one way or the other, it is not optional for the government or the concerned person to obey it or not to obey it. There is only one option: obey it or take recourse to lawful remedy.
I was reading a book, and I'm in the process of it. I'll give a quote from it. Quote, one doesn't fight a patient's ailment by holding placards and sounding slogans against the germs, unquote. The issue will have to be diagnosed, debated, and problem resolved. Friends, in recent years, there has been due and commendable recognition to our unsung heroes obscured in our history. I wouldn't take to details, you all know it. This never happened. Look at the canopy at India Gate, and we have majestic Subhash Chandra Bose giving us all the inspiration. Or for that matter, Birsa Munda, a Bhagwan, how we have commemorated him by having that day. Friends, in recent years, the tangible transformation of governance system has led to emergence of transparent and accountable ecosystem. I'll give two illustrations. Power corridors, for long infested with people engaging in lies and whatnot, have now been sanitized. So sanitized that people don't talk about it now. What used to be a very lucrative industry, it has vanished. And another sea change that has come to be effected in bureaucracy. Bureaucratic positioning, there is eclipse of plum posts. A big change. There was a time when there used to be lobby and industry used to be working overnight in overdrive to ensure who would hold a particular position for a secretary of a particular department. No longer, because work is worship. You don't wield power in authority. You serve in power. And that is why less government, more governance. It is tribute to our heroes that wholesome transformation is taking place owing to series of governmental initiatives and policies enabling citizens to fully exploit their potential and talent. You all know it. We had the occasion to see in this country long queues even to pay your bill. They vanished. We could never imagine that there could be some kind of inclusive growth in banking, that during most difficult days of pandemic, there could be direct transfer. We could never imagine that 11 crore farmers will get more than 2,20,000 crores directly in their accounts. In the process, another lucrative industry has died. Middleman. It has vanished. New vistas of opportunities are now available. It is in this backdrop that our track record in producing more than 80,000 startups and more than 100 unicorns is envy of the world. India today is a global destination of investment and opportunity in otherwise stressed global scenario. Friends, it was a moment of pride for us all in September 2022, when India became the 5th largest global economy. And there was another satisfying factor. In the process, we overtook our erstwhile colonial rulers, the UK. By turn of the decade, India will be the 3rd largest global economy. Friends, I have a special appeal for journalists and intelligentsia.
Don't mistake me. I take journalists to be part of intelligentsia, but only to make my point a little more emphatically, I have put them in two categories. So intelligentsia, that includes journalists and others. My appeal to them is, please generate a climate so that our parliamentarians in temples of democracy exemplify high standards worth emulating by people at large. Why I say so? Our Constituent Assembly that functioned for 3 years and had several sessions. It comprised of illustrious people who believed in nationalism and freedom. They gave us a constitution to us facing contentious issues, divisive issues, and they navigated it without disruption, without disturbance, engaging in debate, dialogue, discussion, and deliberation. There was no occasion for them to come to the well, show placards, or throw papers. And I know for sure, more than 1 billion people do not relish it. They are concerned at it. Media has a big role to play. And I'm sure my friends will heed my advice, because we have come to a stage now where disorder has become the normal order in Parliament. And nothing can be more worrisome than this. It will be real tribute to our heroes that all of us taken together do all we can to nurture and blossom our democracy gifted to us by the sacrifice of real heroes. This can be best achieved and democratic values and public interest optimally served when legislature, the judiciary, and the executive discharge their respective obligations, scrupulously confining to their respective domain and acting in harmony, togetherness, and tandem. Friends, in a dynamic governance and democracy which we are, there will never be a situation where there will be no issues between the institutions. The issues are natural, they are bound to be there. These issues are required to be resolved, taking recourse to deliberative mechanism in a structured manner. And I'm sure if we evolve a structured interactive mechanism, then resolution of issues will be seamless. We need to do it. I wonder sometimes that an expression of a viewpoint, a sublime legal preposition, is dubbed by media with those headlines. That should not take place. I appeal to you. Personally, for me, I can assure you, and there is one in the audience who will bear it out, I'm a foot soldier of judiciary. I've been a senior advocate for over 3 decades. Have held positions as president of the association and in the Bar Council. How can I, even for a moment, ever contemplate that by action or word I will do something which will damage the institution? We signal authorities that this is required to be done in this manner. I would use this platform. Let those at the helm of constitutional institutions not communicate in public domain. Friends, I share with millions of countrymen deep sense of appreciation for real heroes. It's because of them that we are here. It is because of their sacrifice that India today is on the rise. It is because of their efforts that not only our voice is heard globally, the nations wait to find out what is India's stand on this particular issue. Our image in the Committee of Nations
is at a very high pedestal. And by 2047, warriors of which are present here, some of us may not be around, but youngsters here, they are the spinal strength to realize our dream of being a world leader. I express sense of gratitude to Rahulji, Network 18, for devoting this program to them. We shall ever be indebted to them. Thank you. Jai Hind. And can we have a standing ovation for Shri Jagdeep Dhankhar, the Honorable Vice President of India. I request him to take his seat on the stage as we have now come to our grand finale for Rising India Real Heroes. Ladies and gentlemen, we have something very, very special coming up next. The Honorable Prime Minister Narendra Modi is inarguably one of the finest communicators of modern times, and Mann Ki Baat is his masterpiece of elocution. Every month since Vijay Dashmi Day in 2014, Prime Minister Modi, through this singular radio broadcast, has acquainted India with the very best of itself. Mann Ki Baat is the message of our times, and Modi is its messenger-in-chief. So it gives us immense pleasure in capturing a galaxy of inspirational journeys through a special coffee table book. This compact coffee table book, aptly titled The Voices of India, is our humble tribute to Mann Ki Baat and all those extraordinary Indians who have featured in it. It is divided into several themes and contains short pen pictures of those whose work and stories have been profiled by the Prime Minister in his radio address. We request the Honorable Vice President, Shri Jagdeep Dhankhar ji, to unveil the book. May I also request Network 18 Managing Director and Editor-in-Chief, Shri Rahul Joshi, to join us on the stage for this very, very special moment. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause for this coffee table book unveiled in front of you today at the grand finale of Rising India Real Heroes, The Voices of India, capturing the story of ordinary Indians who have done extraordinary things in their life. And through them, as the Vice President said, through these real heroes, we are able to live our lives. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause for The Voices of India, a tribute to the special mentions in the Mann Ki Baat radio address of the Honorable Prime Minister every month. And in fact, Mann Ki Baat will be reaching its 100th episode next month. So there you have it. May I now request the real heroes, and we have awarded and recognized 20 of them from different fields, from sports to education to civic sense. May I request all the 20 real heroes of Rising India to please join the Honorable Vice President on stage for a photo session. Ladies and gentlemen, we would like to kindly usher in these extraordinary Indians who have done remarkable work and whose work has been recognized on this platform. The real heroes of India, ladies and gentlemen. Come on, I'm sure we can have a firmer round of applause for these lovely individuals who have made our lives a bit more enriching. I request all 20 awardees to kindly come up on stage for a photo opportunity with the Honorable Vice President.
even as all the awardees are standing, may I now request for a special conclusion to our function. It is the national anthem. We are presenting a version of our beloved national anthem, and I request the audience to kindly stand up. It's been composed by... All right, I'd request the awardees to kindly stand for the national anthem. Kindly maintain decorum on stage, please. All right. Kindly request the awardees to stand for the national anthem. Thank you. Thank you very much. All right. This version of the national anthem has been composed by three-time Grammy Award winner Ricky Cage. It's dedicated to the natural world of India. Ladies and gentlemen, let's rise for the national anthem. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Ladies and gentlemen, with that we come to the conclusion of Rising India Summit 2023. Thank you all, and thank you to the Honorable Vice President for being our chief guest this evening for the concluding session of Rising India Summit. I request all the guests here not to crowd in front of the stage. Kindly do not crowd. के छिपे होने की आशंका के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात, बड़े अधिकारी हर गतिविधि पर रख रहे हैं नजर। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में दो गुटों की झड़प के समय हुए पथराव और आगजनी का वीडियो सामने आया। पुलिस की 6 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म दी एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर की, लिखा, दी एलिफेंट विस्पर्स की टीम ने भारत को गौरवान्वित किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय का उद्घाटन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और योग गुरु बाबा रामदेव ने किया हवन। मोदी सरनेम पर बयान मामले में राहुल गांधी को बिहार की कोर्ट से नोटिस। एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 अप्रैल को हाजिर होने का भेजा समन्स। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण दिलाने वाली बेटी लवलीना बोरगोहेन का भव्य स्वागत, ढोल नगाड़े बजाकर फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया।
दिल्ली में रूस भारत बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया। फोरम में उद्देश्य आईटी, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट शहरों पर हुई चर्चा। रूस भारत के बीच व्यापार को $50 बिलियन तक पहुंचाने की उम्मीद जताई गई। एसपी विधायक पूजा पाल के भाई पर हमला मामले में धूमनगंज पुलिस ने केस को निराधार बताया। पुलिस ने कहा पटाखे फोड़ने को बमबाजी का आरोप लगाया गया। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई। छापेमारी के समय 53 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने एएमयू के छात्र के कमरे से हथियार मिलने का दावा भी किया। आरोपी छात्र की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली में पुलिस ने सलमान त्यागी गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गैंगस्टर सद्दाम हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के इटावा में गैंगस्टर अनीश पाशु की अवैध संपत्ति के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर किया गया ध्वस्त। अनीश के खिलाफ 47 आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजस्थान के जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध जारी। डॉक्टर अलग अलग तरीके से कर रहे हैं प्रदर्शन। अस्पताल में बिगड़ी व्यवस्था। सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत। पत्रकार से दुर्व्यवहार करने के आरोपों को गलत बताते हुए कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ साल 2019 में की गई शिकायत को खारिज कर दिया है। यूपी के अलीगढ़ में एसबीआई बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियां मौके से पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। बिहार के भागलपुर में गेहूं की फसल में आग लगने से हुआ नुकसान। 15 बीघा से ज्यादा हिस्से में लगा फसल जलकर राख। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर से टकराई पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी। हादसे में प्राइवेट ड्राइवर की हुई मौत। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। बिहार के नालंदा में दुकान से लाखों की गहने लेकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में लूट की वारदात रिकॉर्ड हुई। यूपी के अलीगढ़ में एक लड़के पर आरोपी ने की फायरिंग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई के तिलक नगर इलाके में बदमाशों ने कुछ लोगों पर किया हमला। प्रॉपर्टी विवाद की वजह से चल रहा था विवाद। हमले में 3 लोग घायल हुए। यूपी के संभल में रील बनाने के समय गंगा नदी में डूबा लड़का। गोताखोरों की तलाश के बाद भी लड़के का नहीं पता चल पाया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कई महीने से था फरार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 9 साल की बच्ची की हत्या से मची दहशत। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। ओडिशा के भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज की भव्य रुकुना रथ यात्रा निकाली गई। रथ खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी के आगरा में बारिश और ओले गिरने की वजह से गेहूं और सरसों की फसल को हुआ नुकसान। 5000 से ज्यादा किसानों की लिस्ट बनाकर प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट। किसानों ने मुआवजे की मांग की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। भारत में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लगी रोक। फ्लोरिडा से स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट 56 स्टारलिंक सैटेलाइट के साथ लॉन्च। स्पेसएक्स ने अब तक कुल 4200 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए। कनाडा के टोरंटो में जबरदस्त बर्फबारी से बिगड़े हालात। कड़ाके की ठंड के बीच लोग आने जाने को मजबूर। कुछ समय तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। बखमूत पर फिर बड़े हमले की तैयारी में रूस। शहर की तरफ तेजी से बढ़ रही है पुतिन की सेना। पहले से ही तबाह बखमूत में बड़ी तबाही की तैयारी। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच बड़ा परमाणु महासंकट। जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट का दौरा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र का बड़ा दावा। प्लांट में मिले हमलों के निशान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के जापोरिजिया में नहीं थम रही गोलीबारी। रूस के सैनिकों की तरफ से लगातार बोला जा रहा है हमला। इटली के नोवारा शहर में एक केमिकल प्लांट में आग लगने से हड़कंप मचा। फैक्ट्री के अंदर मौजूद कर्मचारियों का सुरक्षित रेस्क्यू भी किया गया। थाईलैंड के जंगलों में भीषण आग लगने से मचा हाहाकार। दूर तक काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंदिर में बावड़ी गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। कुएं में गिरे कई श्रद्धालु। अब तक 13 लोगों की हुई मौत। अभी तक 19 लोगों को बचाया गया। हादसे का शिकार हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया है। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी दी।
गुजरात के वडोदरा में रामनवमी की शोभा यात्रा के समय 2 गुटों में बवाल। शोभा यात्रा पर पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। आंध्र प्रदेश में रामनवमी पर बड़ा हादसा। वेणुगोपाल मंदिर परिसर में रामनवमी के लिए बनाए गए पंडाल में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी भीषण आग। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। पहले शोभा यात्रा निकालने पर लगी थी रोक। अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव पर किया गया भव्य आयोजन। रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे नजर आए। रामनवमी के मौके पर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर में किया हवन। योगी ने कन्याओं के पैर धोकर लगाया तिलक। सबको अपने हाथ से परोसा खाना। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामनवमी के मौके पर की पूजा। सीएम शिवराज और उनकी पत्नी ने कन्याओं को खाना खिलाया। पटना में रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं पर की गई फूलों की बारिश। पटना मंदिर समिति की ओर से ड्रोन के जरिए की गई पुष्प वर्षा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रामनवमी के मौके पर ट्विटर पर शेयर किया वीडियो में ये रामायण है पुण्य कथा। श्री राम की गीत गाते नजर आ रहे हैं 2 बच्चे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मुस्लिम लोगों ने श्रद्धालुओं को बांटे जूस और पानी की बोतलें। रामनवमी यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं का स्वागत किया। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह और पप्पलप्रीत की कई तस्वीरें जारी की। पंजाब पुलिस ने दोनों को कोई सुराग मिलने पर जनता से जानकारी देने की अपील की। बार-बार हुलिया बदल रहा है अमृतपाल। अमृतपाल मामले में पुलिस और जांच एजेंसियों का एक्शन जारी। पंजाब के अमृतसर में आरएएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। जलूलपुर खेड़ा में आने जाने वाले सभी गाड़ियों की सघनता से जांच हो रही है। पंजाब के होशियारपुर में अमृतपाल की तलाश करने के लिए पुलिस ले रही है ड्रोन की मदद। वहां पर गांव के आसपास पुलिस ड्रोन से रख रही है नजर। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। भारत नेपाल सीमा के पास के इलाकों पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। भगोड़े अमृतपाल सिंह को लेकर हरियाणा पुलिस ने भी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पुलिस को अलर्ट किया गया। पंजाब से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। पंजाब के होशियारपुर में अमृतपाल के छिपे होने की आशंका के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। बड़े अधिकारी हर गतिविधि पर रख रहे हैं नजर। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में 2 गुटों की झड़प के समय हुए पथराव और आगजनी का वीडियो सामने आया। पुलिस की 6 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म दी एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर की। लिखा, दी एलिफेंट विस्पर्स की टीम ने भारत को हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। मोदी साहब ग्रेट मैन। हमारी की या अल्लाह हमें मोदी दे दो। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये पाकिस्तान की हुकूमत कह चुकी है, आवाम मान चुकी है। ये देखे मौलवी साहब खाने रोटी के लिए लड़ाई हो रही है। ये देखे क्या आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप। ये बहुत घटिया कौम है हमारी। कैसे लड़ाई हो? देखो खाने के लिए रोटी के लिए जानी है भाई। ये जो हालत है ठीक है, रोटी के लिए लड़ रहे हैं यार। ये हालात है, लड़ रहे हैं, इन्हें घर से भी कुछ नहीं मिलता। सही बात है। तो क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में ये हालात है, गहमा गहमे के रोटी के लिए लड़ रहे हैं हम, इन्हें कौन ठीक कर सकता है? ये कौमी हंसी है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जिस पाकिस्तान में बच्चों को जन्म से ही भारत और भारत के लोगों के प्रति जहर की जुगाली कराई जाती है, वहां अब हर किसी की जुबान पर भारत और पीएम मोदी का नाम है। आप ग्रेट मैन क्या कर रही हैं? आप मोदी को बुरा इंसान तोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना।
150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में। 1947 से अब तक पाकिस्तान के नेताओं ने अपने लोगों के मन में भारत का खौफ भरा, भारत के हमले का डर दिखाया, लेकिन अब जब हुक्मरानों की कर्जखोरी से मुल्क तबाह और बर्बाद हो चुका है, तो यहाँ के लोगों को हकीकत का एहसास हो चुका है। $700 बिलियन की उनकी इकोनॉमी है, उनको क्या जरूरत है कि एक डिफॉल्ट मुल्क की जो है ना वो उसके ऊपर वो अपना हमला करें। यहाँ पे हमला करने वाले जो है वो तो सारे अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं। बल्कि उन लोगों ने तो सारा इस मुल्क के सही जो है वो अपने दुश्मन जो है ये उकड़ा है। आपको वो सनसनीखेज सच दिखाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु बम से पहले बात भूखे पेट आवाम की। 2 वक्त की रोटी का संकट इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के लोग मरने मारने पर उतारू हैं। इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, पाकिस्तान की जनता की जुबानी सुनिए। अगर हम अपनी जोग्राफिया सूरत हाल को देखें, अफगानिस्तान है, बंगाल है, इंडिया, सब हमसे बहुत आगे चले गए हैं मुआशी तौर पर। और उसमें जो सबसे बड़ा कसूर है ना, वो हमारे सियासतदानों का है और हमारे इदारे कमज़ोर हैं। जब इदारे कमज़ोर होंगे तो फिर जाहिर है इंसान जो है वो मामलात इस तरह ख़राब होते जाते हैं। सवाल ये है कि इस डूबते मुल्क को कौन बचाएगा? मुट्ठी भर आटा और चुटकी भर नमक के लिए तरसते पाकिस्तान के लोगों की डूबती नैया कौन पार लगाएगा? खुद पाकिस्तान की आवाम से ही सुनिए। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। तो पाकिस्तान को ना नवाज शरीफ चाहिए, ना भुट्टो जरदारी खानदान चाहिए, और ना ही इमरान खान चाहिए, ना ही कोई फौजी तानाशाह चाहिए। यहाँ की आवाम को चाहिए तो सिर्फ 135 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरे इनायत। पाकिस्तान के लोगों को तो अब हर मर्ज की एक दवा, गरीबी और जहालत से उबारने वाला एक ही मसीहा नजर आ रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज को मानना चाहिए। कर्ज, भूख, गरीबी की ऐसी मार पाकिस्तान के पेट पर पड़ी है कि वो घुटनों के बल गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तानी सरकार भले भारत से मदद मांगने में हिचक रही है, लेकिन वहां जनता ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में भी आएगा मोदी। पाकिस्तान के कुछ नेता भी अब मानने लगे हैं कि भारत ही उनका बिग ब्रदर है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम ने तो जनता के कपड़े तक उतरवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस पर पाकिस्तान की सरकार ने इतनी ताकत झोंक दी कि वो खुद ही खत्म होने की हालत पर पहुंच गए। कश्मीर का सपना आवाम को दिखाते दिखाते आज पाकिस्तान खुद टुकड़े होने की हालत पर पहुंच गया है, और जनता भी इस बात को बखूबी समझने लगी है कि अब शहबाज शरीफ या इमरान खान किसी पर उन्हें एतबार नहीं है। कश्मीर तो गए हैं आपसे बहुत पहले, वो 1947 में गए हैं, वो तो समझो कि आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक ही चूरन बेचते हो कि कश्मीर ये हो गया। इंडिया को आज कहाँ पे देख, इंडिया हमसे मीलों दूर गए, मीलों दूर। भूख से बिलखती जनता में कोहराम मचा है। हालात ये हो गए हैं कि अब उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण पीएम नरेंद्र मोदी में दिख रही है। पाकिस्तान की जनता अब खुलेआम कह रही है कि उन्हें मोदी चाहिए, यानी पाकिस्तान में भी अब घर घर मोदी के नारे गूंज रहे हैं। 22 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को इस बर्बादी से निकाल पाए। हिंदुस्तान को दुश्मन बताने वाले पाकिस्तान में अब मीडिया भी कहने लगी है कि अब जिद छोड़ो और मोदी के पैर पकड़ो। पाकिस्तान की जनता भी कह रही है कि भारत से मुकाबले का शेख चिल्ली वाला सपना वो छोड़कर अपनी औकात पर आ जाए। उसी हालात में पाकिस्तान की हालत सुधर सकती है।
उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे हुक्मरान जद्दी पुश्ती चोर है। हमारे हुक्मरान जद्दी पुश्ती चोर है। इनका इलाज लंदन में, इनका कारोबार लंदन में, इनके फ्लैट लंदन में, इनके तमाम असासे लंदन में। ये सिर्फ हुकूमत करने पाकिस्तान आते हैं। अगर आप इंडिया के लिहाज से देखें तो वो एक हीरो है। तो ये है कि भी ये भीख हमें, ये भीख आज की नहीं ले रहे हम, ये बड़ी देर से हमें भीख मिलती आ रही है, भीख पे चलते जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। सौगात की एक बात का। सौगात की एक बात में आज रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान गुजरात के वडोदरा और कोलकाता के पास हावड़ा में हंगामा हो गया। रूस अब अपने परमाणु हथियारों के बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं देगा। अमृतपाल का पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी ISI से क्या कनेक्शन है? और सूत्रों के मुताबिक 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने का इंतजार कर रहे नीतीश कुमार कांग्रेस के रुख से निराश बताए गए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रामनवमी के दौरान मचे बवाल पर कोलकाता के पास हावड़ा में रामनवमी के मौके पर निकली शोभा यात्रा के बीच हंगामा हो गया। इस दौरान जहां यह हंगामा हुआ वहां पर आगजनी के साथ पथराव भी किया गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद पुलिस ने वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी। हावड़ा के शिवपुरी इलाके में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगा दिए। वहां से गुजरने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ करने के बाद ही उन्हें आगे जाने दे रही है। और इसके अलावा पुलिस की कई टीमें और गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग करने में जुटी हैं। साथ ही साथ ये देखिए वैन पुलिस की, कोलकाता पुलिस की भी पहुंच चुकी है। हावड़ा पुलिस के साथ ही कोलकाता पुलिस भी मैदान में उतरी है, क्योंकि रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव शुरू हो गया, जिसकी वजह से वहां के हालात तेजी से बिगड़ने लगे। और बताया जा रहा है कि जब कई हिंदू संगठन मिलकर शिवपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तभी उन पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। इसके बाद तो उस पूरे इलाके में बवाल मच गया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इधर उधर भागते दिखे। इस दौरान कई गाड़ियां आग की भीषण लपटों में घिरी नजर आई। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी। इस हंगामे की खबर मिलते ही वहां पुलिस के बड़े अधिकारियों समेत कई टीमें पहुंच गई। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह शांत कराने की कोशिश की। वहीं पुलिस के जवान लोगों को वहां से हटाने में जुट गए। इसके बाद हावड़ा के पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में पुलिस ने उस इलाके में मार्च किया ताकि फिर कोई हंगामा न हो। इधर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रामनवमी पर पुलिस की इजाजत न मिलने के बाद भी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने हिस्सा लिया और भक्ति गानों पर जमकर झूमे। शोभा यात्रा के दौरान कोई बवाल न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी हुई। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने के लिए कुछ हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस से इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने